Hello, my dear friends. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to your very own channel, The Prime Skills. So, दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के ऊपर बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो जनरली बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कभी कोई नया नया स्टूडेंट या नया इंग्लिश लर्नर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज में के पाथ पर जाने की कोशिश करता है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करता है, उसके सामने हमेशा ये एक इशू आता है या फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स मैंने इस तरह की अपने स्टूडेंट्स से भी और काफ़ी सारे लोगों से सुनी है कि मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए या फिर इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, आपको भी लग सकता है कि भाई एनवायरनमेंट तो है नहीं और लोग कहते हैं कि इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस कैसे करें जब एनवायरनमेंट ही नहीं है। In today's session, we are actually going to deal this topic in a very detailed way, and believe me, after understanding the complete phenomena and after understanding or listening to this video or watching this video, you would never be requiring or you would never be asking this question again, because I am going to provide you such techniques and tools which will help you out in creating your own environment around yourself. And believe me, ये बहुत मुश्किल होता है कि आप लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएं। जिस समय आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, हो सकता है कि उस समय कोई भी अवेलेबल ना हो, एंड एट दैट टाइम जब सभी लोग अवेलेबल हैं उस समय हो सकता है कि आपका प्रैक्टिस करने का मूड ना हो या फिर टेम्परामेंट ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट योर ओन एनवायरमेंट, एंड दैट टू वेरी मच क्वालिटेटिव, सो दैट इट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट इन बिकमिंग अ गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेटर. So let's dive in and try to find out that what are the ways to do this and what are the ways to create your own environment in English. Now, in order to create your own environment, the very first thing you need to do is to use all your senses. एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट बनना चाहते हैं, किसी भी चीज को लर्न करने का, किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसमें जितनी ज्यादा सेंसेस को यूज कर सकते हैं उतना उनको यूज कीजिए। ठीक है, सेंसेस को यूज करने का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इंग्लिश का एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है कि आप LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों को इंप्लीमेंट करना शुरू करें। कैसे करेंगे? इफेक्टिव तरीके से करने के लिए मैं आपको बताता हूं। लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट लिसनिंग। अगर आप इंग्लिश का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट यू नीड टू लिसन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी कभी आप किसी लैंग्वेज को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो सॉन्ग्स एंड मूवीज आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी गुड सोर्स। व्हाई? बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच कंसिस्ट ऑफ एंटायर सोशल सिचुएशन। उसमें वो कम्युनिकेशन होता है जहां पे वोकैबुलरी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, ग्रामर के रूल्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते, जहां पे आप कॉमन कॉलोकेशंस को भी पा सकते हैं और किसी चीज में आप ये कॉमन कॉलोकेशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो लिसनिंग के लिए व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर आप अपने लिसनिंग अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए लिसनिंग जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यू कैन लिसन टू द ऑडियो बुक्स। नाउ ऑडियो बुक्स मे बी ऑफ योर चॉइस। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन self help genre, then you can just go for the self help category. If you are interested in some sort of stories, novels and all, every sort of audio book is already available on the internet. Even the application which I use is Audible में बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिनको आप सुन के अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। कमिंग टू द पॉडकास्ट विच इज अनदर पार्ट ऑफ लिसनिंग, यू कैन डाउनलोड गूगल पॉडकास्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडेक्स है जिसके अंदर आप हर तरह का पॉडकास्ट वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन ब्रिटिश काउंसिल एंड देन दैट BBC एंड all the very good podcasts which can definitely help you out in improving your communication, you can find them out there. राइट? सो इफ यू जस्ट सी, व्हेनेवर यू आर गोइंग समवेयर, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, आप पार्क में या फिर आप सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, आप जिम में जा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू लिसन टू दोस पॉडकास्ट, राइट? You need to be actively engaged and involved in learning process. Only then you would be able to become fluent and you will be able to, speak English fluently, right? The second process is speaking. Now, speaking, obviously, आप ये बोलेंगे कि speaking के लिए तो हम ये सारे बातें कर रहे हैं, but again, the thing is, English speaking is a very practical skill. You need to understand that part. What do you need to do? You need to devote every single day at least 10 minutes. I'm not saying much, at least 10 minutes to speak about something. Okay? बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, बट आज भी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैम एक मेथड होता है, जस्ट अ मोमेंट या फिर जस्ट अ मिनट। किसी भी एक टॉपिक को पकड़िए, उसके ऊपर 1 मिनट तक बोलिए एंड प्लीज रिकॉर्ड योर वीडियो।
When you record your video, you not only look at your expressions, you actually understand that how you are speaking and what mistakes you are committing, right? So when you keep on, when you just make it a habit of speaking every single day, 5 or 10 minutes every single day and recording it, you will create a log. उन सारी files को save कीजिएगा, and after 20 to 25 days you will see there is a remarkable difference. Why? Because when you compare the first day and the 21st day, you will see the difference yourself. So that will also create a sort of like monitoring phenomena for you, right? So second part is speaking. Number 3 is reading. Now, you must have actually heard about it that reading is incredibly important for improving your communication, especially the spoken English. Why reading is important? Just try to understand. अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं और उस नॉवल को आप केवल उसकी स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, आप केवल उसके 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 इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बिलीव मी, यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. रीडिंग फॉर लर्निंग इज अ डिफरेंट फिनोमिना. इन द सेम वे अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको, वॉचिंग, राइट, वो भी एक डिफरेंट फिनोमिना होता है. कुछ लोग सोचते हैं कि मूवीज जब हम वॉच करेंगे, लाइक इफ यू आर वॉचिंग द मूवीज, हमारी वोकैबुलरी, हमारी इंग्लिश अपने आप से इंप्रूव हो जाएगी. नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट क्लियरली. जब भी कभी आप पढ़ रहे होते हैं, यू शुड ऑलवेज make a target that today I will read only 2 pages. Okay, when you make a target of reading 2 pages, you don't have a pressure कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, या फिर you don't have, you don't lose track of time. And moreover, apart from that, you just need to maintain your journal. Now, in that journal, what you need to do, whenever you're like passing by, you are actually going across like a paragraph, let's say, and that you find out there is a certain phrase. I'm not talking about the vocabulary and the words in town. I'm talking about the phrase. अगर आपको उसमें कुछ ऐसा phrase मिलता है जिसका मतलब आपको समझ में तो आ गया है, but आप उसको general life में use नहीं करते हैं, write it down in your journal. Now, when you write it down in your journal, it will be there, and you can refer to your journal again and again, and then probably you can use it or you can apply it in your communication when you are communicating. So reading book itself will not improve your vocabulary, neither it will improve your English communication until and unless you actively engage in the process of learning. Okay, because reading book is for various purposes. Sometimes people read only for enjoyment, sometimes people read for the stories, sometimes people read because they are getting bored, but sometimes, only sometimes, people read because they want to improve. You need to increase that sometime to a considerable amount so that that reading can actually contribute something to your development. Okay, number 3 is watching or seeing, right? Now, what do you mean by watching? Eyes, यानी यहाँ पे आप senses use कर रहे हैं देखने का. Some people say that movies can actually enhance your English communication, but please try to understand, movies cannot enhance or improve your English communication until and unless you have an objective to do that. If you're watching the entire movie in one go, let's say that you are simply devoting 2 hours for the entire movie from the beginning till end, and you are enjoying the movie, you're watching the movie for your intention is enjoyment, amusement, in that case you will not be able to improve. Again, in terms of watching movie, if you really want to improve, what you need to do, movies को देखते समय अपना एक टारगेट बनाइए that I will be watching movies for next 20 minutes. किसी भी मूवी का कोई भी पार्ट उठा लीजिए, 20 मिनट तक आपको वो मूवी देखनी है, and please keep your journal ready again whenever, and please keep the subtitles on. If you are not able to understand, if you're able to understand, that's absolutely okay. Now, whenever you come across any phrase, any certain phrase or any certain sentence which you don't use or which you find very much novel or very much impressive, write it down. Don't just write words, write the complete sentence. Now, this sentence, try to use it in your language in the same context. अगर कोई व्यक्ति गुस्से में कोई बात बोल रहा है, आपको पता है कि इस सेंटेंस को गुस्से में बोला जाता है और किस एक्सप्रेशन के साथ बोला जाता है, वो भी आपने वहां पे देखा है, तो आपकी इंग्लिश वहां पे इंप्रूव होगी, क्योंकि जब आप उस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप उसी कॉन्टेक्स्ट, उसी फिनोमिना, उसी फ्रीक्वेंसी और उसी इंटेंशन के साथ बोलेंगे, या फिर उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलेंगे, तो वो उतना ही इंप्रेसिव होगा. सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट. वॉचिंग मूवीज कैन नॉट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन until and unless you are watching movies only for enjoyment. It may, but it will actually take a long time. If you really want to learn English throughout your life, and if you don't want to be fluent up to the end of your life, you can go ahead with that, no issues. But if you have a very limited amount of time and you want something from yourself, you actually want something, some output from yourself, then believe me, you need to devote at least 20 minutes every single day, 15 to 20 minutes every single day, and just dedicate that time especially for learning English, not for watching or enjoying movie. Okay, and then number 4 is writing.
ना वाई राइटिंग, कुछ लोगों को लगता है कि राइटिंग से इंग्लिश स्पीकिंग का क्या लेना देना है। एक बात ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी आप लिखते हैं और स्पेशली इंग्लिश में किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जो आपको नहीं आती है, यू नीड टू इंप्रूव योर थॉट प्रोसेस, यू नीड टू रिकलेक्ट द वोकैबुलरी, यू नीड टू रिकलेक्ट द ग्रामेटिकल explanation, you need to recollect the grammatical structure of the sentence. And I prefer or I recommend that please write in any social context or maybe in social where you have the social pressure. For example, write on the Facebook, write at least a paragraph, write on LinkedIn, where there will be so many professionals, and you will have a social pressure that I need to write it right, I need to write it impressive. In this way, what will happen, you will have to recollect a good vocabulary. इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, if there is very good person, if there is very you can say reputed authority in your domain, try to comment on his post. Now when you are commenting, people will revert back, people will actually revert, or people will actually talk back to you, and sometimes they also reply. At that time, what will happen, when they reply, your motivation goes up and you start improving in English. Now just understand, speaking English fluently actually require you to have the confidence. वो confidence आपके अंदर आना चाहिए कि मुझे English अच्छे से बोलनी आती है, तभी आप fluently बोल पाएंगे. Fluency is nothing but mustering up the confidence to speak in a flow, right? So in order to be fluent, you need to be confident in yourself. कुछ लोग कहते हैं कि fluency से confidence आता है, ये गलत है. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फ्लुएंसी अपने आप से बननी शुरू हो जाती है. वो कॉन्फिडेंस आपको पिकअप करना पड़ेगा. ओके, सो दीज फोर थिंग्स, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड वॉचिंग, right? All these things, and speaking of course, yeah, you would be doing it. So these things are very important to create the environment. Now just try to understand what is environment. केवल आपके चारों तरफ लोग बोल रहे हैं उसी को आप environment बोलते हैं क्या? नहीं, आप एनवायरमेंट अपने आप क्रिएट करते हैं. आप सुन रहे हैं इंग्लिश, बात कर रहे हैं इंग्लिश में, पढ़ इंग्लिश रहे हैं, देख इंग्लिश रहे हैं. आपको नहीं लगता कि आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया है विच इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ द पीपल सराउंडेड यू, पीपल सराउंडिंग यू एंड टॉकिंग इन इंग्लिश? दैट इज फार बेटर. लोग आपके चारों तरफ इंग्लिश में बात कर रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे एनवायरमेंट का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है. So that's what I'm talking about, that if you really want to communicate in English, if you really want to create the environment, that is the first part. Okay, now what is the second part? The second part is participation. हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम लोग इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग चैलेंजेस को लेने से डरते हैं. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना बताता हूँ. आई एम एन इंस्ट्रक्टर ऑल्सो, आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स whenever I am training students and whenever I am training the corporate people, they always hold themselves back from coming on the podium. नो जस्ट अंडरस्टैंड, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ, ये एग्जांपल मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है. अगर आप गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, यू नीड टू सिट इन द चेयर इन द ड्राइविंग सीट, यू नीड टू होल्ड द स्टीयरिंग, you need to actually put your feet on that accelerator, clutch and brake, and then you need to apply them as and when required. Only then you would be able to understand and learn how to drive a car. If I am asking you to come over the podium, if I am asking you to take up the challenges, but you are running out of them, believe me, it will always keep that fear intact in your mind that you would not be able to speak up. So understand this part very clearly once again. What you need to do, whenever there is a challenge, and if there is no challenge, please create one. How can you create the challenge? Just give me a moment, I'm going to tell you. So whenever you are having a challenge, make sure that you show up for that. Maybe it may be a public speaking challenge, it may be somebody is asking you to speak up something, somebody is asking you to say few words in appreciation of something, of somebody may ask you for advice, somebody may ask you for suggestions. Make sure that whenever you are getting any opportunity to speak up, you are speaking up. Okay, now if there is no challenge, how can you create the challenge? You can join certain groups. So for example, I am a part of one very international organization, which is the Toastmasters Club. In that Toastmasters Club, every weekend we people, I mean like all the people who are interested in communication, who are interested in improving their public speaking skills, they collect together and they actually speak up, right? And we not only speak up, we actually help each other in becoming better version of ourselves. So you can join such club, maybe Toastmaster. You can search a Toastmaster club in your locality and you can join it. If you don't want to join that because that actually incurs a fee which you need to pay, then you can create your own group, maybe 4 to 5 people who are very much interested, and every third day or every weekend you can meet up and just start talking about any topic, maybe politics, maybe religion, topics which are taboo. They actually require some emotional, some emotional aspect, and that is very difficult part of communication.
सो यू कैन क्रिएट दैट टाइप ऑफ ग्रुप. आप ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें आप इस तरह का चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर टोस्ट मास्टर क्लब या ऐसे किसी भी क्लब को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको ऐसे challenges मिलते हो. This was the second way of creating an environment. Now there is a third and very frequently used way of creating an environment, and that is applications, your mobile applications, right? There are various mobile applications which allows you to talk to people who you don't know, who are strangers to you. For example, I have came across a lot of such applications such as the Joe's Talk, Cambly, Clappingo, English Talks, or English something like that. So there are so many applications which can definitely help you out. Of course, they are paid ones, some are paid ones, some are free. I will create a like separate video for that applications as well, because that will definitely going to help you out. One particular application which I like, if you really want to communicate with yourself, that is talkenglish.com. There is a website also, and you can download the talkenglish.com, and उसमें जो dialogues होते हैं उन dialogue में like there is a partner, so one line will be spoken by the partner, second line you can record, and you can definitely find out how you are speaking. So that is much in a like dialogue conversation sort of communication, वहाँ पे भी आप learn कर सकते हैं. So तीसरा important तरीका आपका environment create करने का है कि आप applications का use कर सकते हैं, mobile applications जो कि आजकल बहुत frequent है, आप उनको आसानी से download कर सकते हैं और आप उनका use कर सकते हैं. So मेरा कहना यहाँ पे सिर्फ इतना है, my dear friends, that environment is just a sort of you can say mental preparation. If you really want to speak in English, if you are passionate about English, because you understand this point, your why is more important than how. आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, आपका मोटिवेशन क्या है. अगर आपका मोटिवेशन अच्छा खासा हाई है, then believe me, you will definitely find a way to create the environment around you. You do not need to crave for environment, or you do not need to make an excuse for environment. Environment is just a mental creation. You create the environment in your mind and it will always be there. बुक्स पढ़िए, मूवीज देखिए, सॉन्ग सुनिए, अपने आप से बातें कीजिए, खुद से बातें कीजिए, खुद को रिकॉर्ड कीजिए, and then gradually you will try to find out that how exactly you are improving and how exactly you are, you will definitely see a significant improvement in that. Okay, so I believe that you understood what I wanted to say, and that was all which I wanted to mention here. There may be some other ways also through which you are creating your environment. अगर कोई ऐसा तरीका है जो मैंने मिस किया है और आप चाहते हैं, because I am very much receptive for that, right? अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जो मुझे पता होना चाहिए या फिर मैं लोगों को बताऊं, please make sure to just comment it in. And if you really want me to create any certain video on any particular topic, make sure that you let me know through the Telegram channel or WhatsApp or through the comment box. Thank you so much for being with me. I'm sure that you are going to see me very soon again in the next video, or maybe the previous videos, and because we are on a journey to communicate, we are journey to speak English fluently, we are on a journey to learn English fluently. Okay, so see you in the next video, my dear friends, and till then, keep learning, and please do not forget. Yeah, I'm saying not subscribing. Well, it happens anyway. गलतियां इंग्लिश बोलने का एक पार्ट है. All right, so please don't forget to subscribe the channel, do share and like the video if you really like it, and please ask your friends to just watch these videos so that they can also help themselves in improving communication. See you in the next video, guys. Till then, keep learning. Have a good day ahead.